Assalamu alaikum everyone. I'm Nahida Tasneem. I'll be giving a brief introduction about AMP. AMP AMP stands for Association of Muslim Professionals. It was created in the year 2007 with the mission of empowering the community, especially Muslims, in education, social, political, and economical fronts of life. AMP strives to achieve empowerment by channelizing the immense potential of the talented and educated young minds with the rich and enormous knowledge of the experienced. AMP is a single podium where our individual scattered efforts are transformed into a big collective and effective force by the renovation of the whole community. With its glorious selfless service, AMP is registered in India, USA, UK, and Australia as a non-profit organization. Alhamdulillah, AMP has completed 13 glorious years serving a community in the field in various fields like education, employment, and empowerment. Our only mission is to positively impact the lives of 10 million people by 2030, inshallah. AMP's only mission is to empower the unprivileged for the greater benefits of the society. The only mission of AMP is to model a community which is advanced in education, socially progressive, culturally vibrant, potentially influential, and economically dynamic. In order to see our growth, we must see our achievements. Next slide, please. AMP has many ongoing chapters. Few of them are listed here on the screen. The first one is School Development Program. School Development Program is one of the AMP's main flagship project, which has been the most impactful as well. Through School Development Program, AMP has conducted 2,800 plus skill development lectures and connected with 800 plus schools, through which 281,000 students have been benefited. Additionally, 110 plus teacher training and parenting workshops have been conducted to keep the teachers and parents updated on the latest development in teaching. The second project is Employment Assistance Cell, through which AMP has conducted 360 plus job fairs and drives, and 21,000 plus candidates have been benefited. 220 plus employability trainings have been conducted, and 17,000 plus degree students have been benefited through our all activities. The next project is scholarship and self-employment. AMP has been successful in always rewarding the meritorious students through higher education scholarship. Till now, 800 plus higher education scholarships have been sent out, and 860 plus orphan educations have been aided through AMP. And 425 plus families have been transformed by helping them in self-employment assistance. Next is AMP Resource Center. Our website is full of resources. Once you visit, you can see 660 plus career counselors, through which 2,500 plus students have been counseled till now. And you can also find 50 plus documents on various career guidance. Also, 1,500 plus charts have been sent out to various schools and colleges. And next is awards and partnership. AMP has always recognized the talent and has always been rewarding them with various awards. 380 plus educationalists have been awarded. Also, AMP has partnership with 50 plus government agencies. It has partnered with 100 plus NGOs as well. AMP has recently launched 3 digital initiatives: indiazakat.com, the indiamentors.com, and amper.com. Indiazakat.com is India's first crowdfunding platform through which AMP aims to transform the zakat seekers to zakat givers. Alhamdulillah, in less than a year, indiazakat.com has so far helped 800 plus families and NGOs by raising 2.5 crore plus rupees through 7,500 plus donations. And the second is the indiamentors.com, through which various mentors have been assigned the job of helping the students to find a right career guidance. And next is amperjobs.com. It is a free portal for job seekers, and it has been specially created by the industry professionals voluntarily for the sake of freshers and those affected by COVID-19 pandemic. Next slide, please.
our ground presence. Currently, AMP has more than 140 plus active chapters, which are spread across 26 states with 16 countries, connecting 6,000 plus active members. Our online presence is more than 1,25,000, connecting various members and professionals through social media handles. If you are interested to volunteer with our organization, please visit our website www.amp.org/joinamp. Thank you. Jazakallah, Sister Nahida. With that, I would like to start our session, which is career option in central government service. This is something which is everybody look forward to. Everybody wants to be guided correctly for this thing. This is something which cannot be achieved overnight. It needs rigorous hard work and a proper direction. For that, we have our eminent speaker over here who is going to take this topic. He is a sub-inspector in Telangana Prohibited and Excise Department. For that, I would request Sister Nahida to give a short introduction for our speaker. Over to you, Nahida. Oh, thank you. Hello and welcome everyone to today's webinar. Today, I'm profoundly delighted to take an opportunity to introduce our guest of honor for this evening. He is Mr. Sub-Inspector Amer Arafath. He is currently working as Sub-Inspector in Telangana Prohibition and Excise Department. His work involves in controlling illicit distilled liquor, narcotic drugs, and psychotropic substances. In today's evening, he will be guiding us on how Muslims can enter various central government services like UPSC, SSC, Armed Forces, and Railways with his experience, inshallah. Without further ado, I welcome our guest of honor and ask you to take over this session. Over to you, sir. Thank you. Assalamu alaikum. A very good evening to everyone. Before starting the session, I would like to thank AMP for giving me this opportunity. Coming to our web talk, today I'll be discussing about 10 central government jobs, their nature of work, exam pattern, and educational qualification. Also, in today's session, I'll be broadly covering 3 areas. Why the government services? The second is what are the government services available. Third is how to crack this job. Okay, so first I'll be telling why government services. Because government service gives you an opportunity to serve the nation, bring a change at various levels, and take part in development altogether. Okay, so now the second point is that what are the government services available to us. Simultaneously, I'll be speaking bilingually, both in Hindi and English, so that everyone can understand what I'm trying to convey. Okay, so first I'll be telling about all the 10 central government jobs. So first I'll be broadly telling the 10 central government jobs. That is, first is SSC CHSL, that is combined higher secondary level. Second, I'll be covering SSC CGL, that is combined graduate level. Third is IBPS, Institute of Banking and Personal Selection. In that, I'll be covering the clerk section and as well as probationary officer section. Okay, I have said about 4 services. Fifth is SBI clerk and SBI PO. Seventh is about NDA, National Defense Academy Examination. Eighth is Combined Defense Service Examination. Ninth is Air Force Common Admission Test. And last is UPSC CAPF, Central Armed Police Forces. So in this particular session, I'll be covering these 10 jobs, and apart from this, I'll be if possible, I'll be taking another session where I'll be covering the remaining jobs. Okay, so first I'll be telling about combined higher secondary level, which is conducted by SSC. So
देर आर 4 types of jobs. इसमें होता ये है कि 4 kind of jobs रहते हैं. So, first is data entry operator, second is lower divisional clerk, third is court clerk, fourth is postal assistant. So these 4 kind of jobs, the education criteria of this 4 kind of job is the candidate must have passed the intermediate examination. Okay, so the salary of these 4 jobs will be about 24,175. तो इसमें होता ये है कि 3 tier examinations होते हैं. First is in first tier examination we'll be having 4 subjects. That is general intelligence. It consists of 25 questions, and the maximum marks for these 25 questions is 50 marks. It means that one question is having 2 marks. So 25 into 2 is equals to 50. In general intelligence, we'll be having verbal reasoning, non-verbal reasoning, and remaining aptitude kind of questions. Not exactly aptitude, but you can say reasoning kind of questions. Okay, so second point is general awareness. तो इसमें जनरल अवेयरनेस में होता ये है कि जनरल नॉलेज क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि पॉलिटी हो गया है, अपना इकोनॉमी हो गया है, और कल्चर पार्ट हो गया है, हिस्ट्री हो गया है, ज्योग्राफी हो गया है. तो इसमें भी 25 क्वेश्चंस है और ईच कैरीज 2 मार्क्स, so that is 50 marks. So the third section is quantitative aptitude. ये इसमें भी 25 क्वेश्चंस होते हैं, which consists of basic arithmetic skills like profit and loss हो गया है आपका, सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चंस हो गए उसमें, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाले हो गए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गए उसमें, और टाइम स्पीड और डिस्टेंस वाला फार्मूला होगा, and various arithmetic questions will be included in this particular quantitative aptitude section, which consists of 25 questions, and each question carries 2 marks, that is 50 marks. So the fourth section is regarding the English language. So basic test will be taken in English language. It is of class 10th level. So the questions like synonyms, antonyms, sentence formation, parts of speech will be included in this particular section. So till now in tier 1 examination we have covered 4 sections. Those are, first is general intelligence, second is general awareness, third is quantitative aptitude, and fourth is English language. So these 4 sections consist of 100 questions, and for each question there is 2 marks, and that is 100 into 2, 200 marks. So I think everyone has got what I am trying to convey. So the time for 100 questions is just 1 hour. In 1 hour you have to complete the 100 questions, and for each wrong answer there will be a negative marking. So based upon the merit, the selection will be taken out, and the candidate will progress into the second round, that is tier 2. So SSC CHSL tier 2 consists of descriptive test. ओके, तो इसमें होता ये है कि कैंडिडेट के राइटिंग स्किल्स को टेस्ट किया जाता है, और इसमें इंग्लिश या फिर हिंदी में ऐसे लिखना पड़ता है of about 200 to 250 marks, 250 words. The minimum marks that a candidate need to score is 33% out of this particular exam, this particular tier 2 exam, and time duration of this exam is 60 minutes, and marks are 100 marks. तो इसमें होता ये है कि 100 मार्क्स में से आपको लाना है 33%, दैट इज 33 मार्क्स लाना है, और 200 से 250 वर्ड्स का इससे होता है. तो ये 2 टायर एग्जाम्स है एसएससी सीएचएसएल में कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम होता है, जिसकी सैलरी 24,175 स्टार्टिंग से है. इसमें 4 जॉब लिस्ट है: डेटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिविजनल क्लर्क, कोर्ट क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट. तो इसका eligibility criteria, education criteria, the candidate must have passed intermediate. Okay, with this we have completed the first kind of examination. Now we'll be moving to second, that is
SSC CGL combined graduate level. So इसमें ये होता है कि इसमें वेरियस एग्जाम्स होते हैं, अबाउट 8 to 10 काइंड्स ऑफ जॉब लिस्ट होती है, जिसमें मैं आपके पीपीटी में आई थिंक इट इज हैविंग 5 job lists, which is first is assistant audit officer, second is assistant account officer, third is inspector of central excise, fourth is assistant enforcement officer, fifth is inspector of IT, that is income tax. Apart from this, there will be having post like sub inspector in CBI as well, and CBI, and I think in PMO office there will be some kind of group B and group C category type of post will be included in SSC CGL. So the salary for this particular job list will differ from 38,300 to 54,200. इसमें होता ये है कि कुछ काइंड ऑफ जॉब्स ग्रुप बी होते हैं और कुछ काइंड ऑफ जॉब ग्रुप सी होते हैं. जो ग्रुप बी जॉब होते हैं ना, उसका सैलरी थोड़े बढ़कर रहती है when compared to group C. And the eligibility criteria for writing this SSC CGL is graduation. आपको ग्रेजुएशन होना पड़ता है in any stream. So in this particular exam you'll be having 4 tiers of 4 tiers. That is, in first tier you'll be having English test, aptitude test, reasoning test, and general awareness. You'll be seeing that tier 1 below the page. So इसमें ये होता है कि जनरल इंटेलिजेंस में सेम वही काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 25, और एक ईच क्वेश्चन 2 marks 50. सेकेंड इज जनरल अवेयरनेस, थर्ड सेक्शन इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फोर्थ इज इंग्लिश कंप्रहेंशन. उसमें एसएससी सीएचएसएल में ये होता है कि इंग्लिश टेस्ट होता है, इसमें इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन टेस्ट होता है. तो इसमें द डिफरेंस बिटवीन द इंग्लिश टेस्ट एंड इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन टेस्ट, इसमें होता है ये कि पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ को समझकर फिर वी नीड टू आंसर द क्वेश्चन व्हिच आर मेंशन्ड बिलो द पैराग्राफ. So the same kind of questions, 100 questions, and the marks are 200. इसको भी 1 hour होता है, और इस पे सेक्शनल कट ऑफ कुछ नहीं होता है, लेकिन जनरल कट ऑफ होता है मेरिट वाइज. तो और नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें. तो यू हैव टू attempt only those questions which you are confident in attempting that particular question. So after SSC CGL tier 1, it is tier 2. तो इसमें भी 4 sections, 4 exams, 4 papers होते हैं. फर्स्ट इज पेपर 1, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. इसमें होता है 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के. ईच क्वेश्चन इज अबाउट 2 marks and time allotted is 2 hours. क्वांटिटेटिव एबिलिटी में इसमें सेम वही काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, और आपके नंबर सिस्टम, इनकम लाइक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, और बहुत सारे आपको क्वेश्चंस कवर होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में. पेपर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन. द डिफरेंस हियर यू कैन सी द इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन. So in comprehension you will be having paragraph and you need to answer the questions below the paragraph. And in English language the questions covered are parts of speech, synonyms, antonyms, and rest of the grammatical part. Okay, so in this paper 2 you will be having 200 questions, and for each question there will be 1 mark, that is 200 marks. Paper 3 will be of statistics. Paper 3 होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 2 marks का ईच क्वेश्चन होता है. एंड पेपर 4 इसमें जनरल स्टडीज होता है, जो फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है. जैसा कि अब जीडीपी ग्रोथ हो गया है, कितना है इन 2021, व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ इंडिया जीडीपी इन लास्ट क्वार्टर और इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर. तो ये होता है इसमें with respect to finance and economics, not generalized general studies वाला section नहीं होता है इसमें. And this section consists of 100 questions, and each question consists of 2 marks, that is 200 marks. So there will be negative marking of 0.25 for each wrong answer, and in paper 2, and 0.5 marks for in paper 1, paper 3, and paper 4. So
दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन नेगेटिव मार्किंग. तो इससे आपका सेकंड टायर 2 पेपर हो जाता है. थर्ड, कमिंग टू थर्ड पेपर, ये भी डिस्क्रिप्टिव होता है जैसा फर्स्ट वाला में CHSL में होता है ना, सेम वैसे ही होता है इसमें. इट कंसिस्ट ऑफ ऐसे पेपर which will be in Hindi or English, and इसमें होते हैं 100 marks, और you'll be having 1 hour. In 1 hour you have to score minimum of 33% to qualify this tier 3. And coming to tier 4 exam, ये ऑप्शनल है. ये हर एग्जाम, हर पर्टिकुलर पोस्ट के लिए नहीं होता है. दिस tier 4 exam will be for only for some posts, like for accounts officer test and for some data entry operator kind of test. Not data entry. In this CGL will be having office related work. For that particular job role, you need to have computer skill test. So in this test, in this particular computer skill test, there are two sub tests. First is desk test and second is PPT. So first desk test is about typing skills. You need to, the test is required to check candidate writing skills. And second is about candidate proficiency in word processing, spreadsheet, that is Excel sheets, and generation of slides, that is PPTs. You need to do all kind of work. आपको ये होता है कि MS Excel आना चाहिए आपको ये PPT क्लियर करने के लिए, और टेस्ट क्लियर करने के लिए आपको आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए. इसमें ये रिक्वायरमेंट है कि 15 मिनट्स में आपको 200 वर्ड्स आपको टाइप करना है. विद दिस 4 टायर एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, और आपका सिलेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द मेरिट एंड मेरिट रैंकिंग, you will be getting post accordingly. So with this we have completed SSC, CHSL and CGL. So coming to third kind of job, that is IBPS, Institute of Banking and Personal Selection. इसमें IBPS का एग्जाम होता है. इसमें दो काइंड ऑफ एग्जाम्स होते हैं. एक है क्लर्क का एग्जाम और एक है प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम. तो क्लर्क का एग्जाम की सैलरी रहेगी आपको 32,024, और इसका क्राइटेरिया है एनी ग्रेजुएशन. बैंक में जो गवर्नमेंट या फिर आजकल प्राइवेट बैंक में भी IBPS ले रहे हैं वो. तो देयर विल बी एक टेस्ट. द एग्जाम पैटर्न विल बी लाइक यू विल बी राइटिंग प्रीलिम्स, मेंस, एंड इन probationary officer you will be writing prelims, mains plus interview. You will be giving interview as well, but not in clerk. The difference between clerk and probationary officer is you will be giving one extra round of interview for probationary examination. तो क्लर्क में ये होता है कि फर्स्ट प्रीलिम्स होता है. प्रीलिम्स में 3 सेक्शंस होते हैं. फर्स्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड इज न्यूमेरिकल एबिलिटी, थर्ड इज रीजनिंग एबिलिटी. अभी होता ये है कि उसमें जो CGL पार्ट में होता ये है कि उसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट ये होता है कि एप्टीट्यूड वाला पार्ट होता है. एप्टीट्यूड, इंग्लिश और रीजनिंग का अलग होता है. फिर फिनेंशियल अवेयरनेस वाला भी पार्ट होता है. इसमें फिनेंशियल एबिलिटी वाला पार्ट नहीं होता है. in this we'll be having only 3 sections. That is, first English language, the number of questions will be 30 and the maximum marks will be 30. For each question 1 mark. The time duration will be 20 minutes, and this will be sectional time limit. And in the second section there will be numerical ability, that is quantitative aptitude. Numbers के साथ जैसे नंबर सीरीज होता है ना, तो वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें पूछा जाता है. तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 एंड मैक्सिमम मार्क्स आर 35. इसका भी 20 मिनट्स है. थर्ड पार्ट है रीजनिंग एबिलिटी, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स. तो टोटल मिलाकर 30 इंग्लिश के होते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 एंड रीजनिंग एबिलिटी 35 होते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर prelims examination are 100 questions, and for 100 questions you'll be having 100 maximum marks, and the time duration for this examination is 1 hour. Now after getting through the prelims, you will be having mains examination. In mains examination, the same kind of thing you will be having in the exam. In the first section you'll be having reasoning ability, but in the prelims we will be having reasoning ability in the third section, but in means we'll be having reasoning ability in the first section, and with reasoning ability we'll be having computer aptitude, like computer related questions,
basic computer related questions, Excel related questions, MS Office related questions. We'll be having those kind of questions. And the number of questions are 50. And the maximum marks are 60. So the duration is 45 minutes. And second part is English language. इसमें इंग्लिश के होते ये कि 40 क्वेश्चन होते हैं और each question carries 1 mark. थर्ड इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. तो इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स का ये होता है. और फोर्थ वन इज जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस. फर्स्ट वाला इन द प्रीलिम्स वी डोंट हैव financial and general awareness, but in the mains examination we'll be having this particular section, and for and the questions are 50 and the maximum marks are 50. So the total number of questions are 190 and the maximum marks are 200, and the time duration is 160. Within the 160 minutes you'll be writing 190 questions, and there will be negative marking for wrong answer. So be careful while attempting the question. If you are sure, then you can mark, or else you have to leave it simply. And the second kind of question in IBPS section is probationary officer. So in probationary officer, the probationary officer, there will be written examination as well as interview section. In the written examination, same as clerk examination, we will be having 2 stages. First is prelims stage and second is mains stage. So coming to the salary section, we will be having 57,200 salary, and the criteria is any graduation, both in clerk and both in probationary officer. The criteria is any graduation. So the exam pattern will be prelims, mains and interview. इसमें होता ये है कि आपको सेम प्रीलिम्स, उसका प्रीलिम्स क्लर्क वाला और इसका प्रीलिम्स सेम होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. 30 क्वेश्चन, 35 न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी भी 35 होते हैं. 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स. तो विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद मेंस एग्जामिनेशन. उसमें भी सेम होता है, इसमें भी सेम होता है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि इसमें डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट होता है. इसमें ये डेटा एनालिसिस का पार्ट ये होता है कि अब जैसा फॉर एग्जांपल एक वेन डायग्राम दे देते हैं. वेन डायग्राम से आपको बताते हैं कि इसमें कितना डेटा, विच ऑफ द पर्टिकुलर सिटी, इन विच पर्टिकुलर सिटी हाउ मेनी पीपल बिलोंग्स टू, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि इन दिस पर्टिकुलर सिटी certain percentage of population speak Telugu language, and certain percent of population speak English language, Hindi language. तो इसका फिर हमको एनालिसिस बनाना पड़ता है. तो वो कंबाइंड कितने होते हैं, हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन कितना है, इंग्लिश और तेलुगु का कॉम्बिनेशन कितना है. तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल कम इनटू डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट में होता है. तो इसके 35 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स है. इंग्लिश लैंग्वेज के 35 है और मार्क्स है 40. रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड वाले 45 है एंड मैक्सिमम मार्क्स है 60. फाइनल सेक्शन इज अबाउट जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस. तो बैंकिंग के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि अब एक्सिस बैंक का सीईओ कौन है, या फिर एसबीआई का सीईओ कौन है. ऐसा दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू बैंकिंग will come into this main part, like what is the repo rate of the previous RBI policy. So these kind of questions will come into the mains examination. तो इसका भी 40 questions होते हैं और 40 marks. तो total है 155 questions, and you need to score maximum marks is 200. So 180 minutes होते हैं, that is 3 hours. So coming to the next section, will be having English language, in which there will be letter rating and essay. तो इसके 25 मार्क्स होते हैं और 30 मिनट का होता है. फिर फाइनली इंटरव्यू होता है. इंटरव्यू के 100 मार्क्स होते हैं और मिनिमम मार्क्स यू नीड टू स्कोर फॉर इंटरव्यू इज 40%. और अगर SC ST OBC PW कैटेगरीज होते हैं तो आपको यू नीड टू स्कोर मिनिमम 35% टू क्लियर द इंटरव्यू. पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर विल बी 0.25 मार्क्स for every wrong question. फाइनल सिलेक्शन कैसा होता है इसका, मेंस का और इंटरव्यू के मार्क्स क्यूमुलेटिव ऐड करते हैं, नॉट ऑफ प्रीलिम्स. प्रीलिम्स विल बी जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, एंड the marks of mains and the marks of interview will be added, and the final list will be prepared based on the cumulative scores of mains and interview.
So the next is SSB board, Staff Services Selection Board. इसमें 3 एग्जामिनेशन होते हैं. फर्स्ट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन, सेकेंड होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, थर्ड इज एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट. तो in service selection board, first you need to clear this written examination of these three particular examination, and then you need to go to the service selection board for personal interview. So first we'll discuss about NDA, National Defense Academy Examination. तो इसमें ये होता है कि जो 16.5 years to 19.5 years का एलिजिबिलिटी होता है, आफ्टर 10th क्लास यू नीड टू राइट दिस NDA वाला एग्जाम. ठीक है, तो इसमें आप क्वालिफाई करने के बाद यू विल गेट एन ऑप्शन टू गेट इनटू द इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी और एयरफोर्स. 3 आपको ऑप्शंस मिलते हैं, और इसका ट्रेनिंग है 4 years फॉर इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए एक्स्ट्रा 6 months होते हैं. और ये सिर्फ मेन के लिए है, वुमेन के लिए ये नहीं है. ठीक है, और इसका NDA का सब्जेक्ट है, इसमें 2 सब्जेक्ट है पेपर में. फर्स्ट इज मैथमेटिक्स, यू विल बी हैविंग 120 क्वेश्चन एंड द टाइम ड्यूरेशन इज 2.5 hours एंड द मैक्सिमम मार्क्स आर 300. सेकेंड है जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसमें पेपर 2 यही होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट का. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आर 150, सेम टाइम 2.5 hours एंड द मैक्सिमम मार्क्स आर 600. सो that out of 270 questions, you will be if you qualify in the top merit list, then you will be getting into the second round. That is, in second round you will be having English in part A, that consists of 200 marks, and second part is general knowledge. इसमें होता ये है कि फिजिक्स के 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री के 60 मार्क्स होते हैं, जनरल साइंस के 40 होते हैं, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट 80, ज्योग्राफी 80, करंट इवेंट 40, टोटल 600 मार्क्स होते हैं. और ईच नेगेटिव आंसर को 1.33 मार्क्स डिडक्शन होते हैं. और अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उसका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा. सेकेंड इज कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, इसमें एज लिमिट है 19 to 24. CDSE ये एग्जाम कंडक्ट करता है UPSC, और फर्स्ट वाला जो NDA है ये भी UPSC कंडक्ट करता है. इसमें एज लिमिट है 19 to 24. मेन एंड वुमेन बोथ आर allowed to write this examination. Training will be 18 months, and the criteria for CDSE is you need to clear the graduation, and the criteria for NDA is you need to qualify intermediate. तो उसमें 4 years की ट्रेनिंग होती है NDA में, और CDSE में 18 months की ट्रेनिंग होती है. फॉर मिलिट्री कैडेट्स 37 to 40 months की ट्रेनिंग होती है फॉर नेवी, एंड 74 फॉर एयरफोर्स ऑफिसर. ये ट्रेनिंग वाला पार्ट है. और इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है, अगर आप आर्मी सिलेक्ट करते हैं तो यू नीड टू गो टू इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून. ओके, तो अगर आप नेवी सिलेक्ट करते हैं, यू नीड टू गो इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला. if you select airforce, then you need to go to Hyderabad, Indian Air Force Hyderabad. And the fourth part is OTA, Officers Training Academy. If you take this part, then you'll have to go to Chennai. Okay, so the basic difference between NDA and CDSE is the eligibility criteria for NDA is intermediate, and the eligibility criteria for CDSE is graduation. उसमें 16.5 to 19.5 एज लिमिट होता है NDA में, और इसमें 19 से 24 का एज लिमिट होता है. ये बेसिक डिफरेंस है. और सैलरी दोनों की भी 56,100 आपको ट्रेनिंग से मिलती है. और आपकी जब ट्रेनिंग खत्म होती है, यू विल बी गेट लेफ्टिनेंट रैंक ऑन कमीशन. कमीशन का मतलब है कि आफ्टर ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग पास होते हैं ना, देन यू विल बी कॉल्ड एज कमीशन्ड कैडेट. तो कमीशन कैडेट का रैंक होता है लेफ्टिनेंट. एंड if you can see this promotion list, then you can come to know that after lieutenant, if you serve for 2 years, then you will be promoted as captain. फिर 6 साल के बाद मेजर होता है. फिर 13 साल के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल होता है. 15 साल कर्नल.
तो फिर उसके बाद जैसा जैसा आपका टाइम बढ़ता है, ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, फिर लास्ट में जनरल बनते हैं। और ये एनडीए को बहुत कम होता है सिलेक्शन, सीडीएस से बहुत जल्दी होता है सिलेक्शन का। और सीडीएसई का सेम पैटर्न है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इसमें होता है ये कि इंग्लिश लैंग्वेज होता है, जनरल नॉलेज होता है, प्लस एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है। 2 hours फॉर ईच सेक्शन एंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच सेक्शन इज 100। एकेडमी सिर्फ इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज वाला पार्ट होता है, इसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स वाला पार्ट नहीं होता है। तो और नेगेटिव क्वेश्चन, इसमें नेगेटिव क्वेश्चन को 0.33 मार्क्स मिलते हैं। और थर्ड वाला है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। तो द एलिजिबिलिटी फॉर ASCAT is 20 to 24 years, and this particular ASCAT is of SSC, Short Service Commission, which means that you need to serve for only 14 years. इसमें होता ये है कि इसमें 2 काइंड ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं, एक फ्लाइंग बैच का होता है और एक सेकंड वन है टेक्निकल वाला। फर्स्ट वाला फ्लाइंग वाला उसका होता है, उसके होते हैं 100 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, 100 into 3 300। एंड कमिंग टू टेक्निकल पार्ट, इसमें होता है 50 क्वेश्चन, इसमें भी 3 मार्क्स के होते हैं, 50 into 3 130। टाइम ड्यूरेशन जो 100 क्वेश्चन का जो टाइम ड्यूरेशन है 2 hours है एंड 50 क्वेश्चन का है 45 मिनट। सो इन ASCAT flying batch you'll be having general awareness question, verbal ability, English test, numerical, reasoning and military aptitude test. And coming to the EKT, that is technical part, in that you will be having questions from mechanical stream, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। जैसा कि बीटेक इलेक्ट्रिकल है तो उसको वो बंदे को इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आएंगे। अगर कोई बंदा है बीटेक मैकेनिकल वाला तो उसको आएगा मैकेनिकल क्वेश्चन। कंप्यूटर साइंस है तो उसको कंप्यूटर साइंस आएंगे। और नेगेटिव मार्किंग है 1 मार्क। और इसके बाद एक सेकेंड, हाँ, इसके बाद ये 3 एग्जाम्स है जिसको मैंने डिस्कस किया है। फर्स्ट इज DA, second is CDSC, third is ASCAT. In ASCAT, we'll be having 2 examinations. One is flying batch officer, flying batch wala department, and second is technical. So after completion of these 3 written examination, the candidate accessing his personal interview. Okay, so personal interview होता है वहाँ पे SSB पे। ये SSB one of the toughest examinations है, toughest examination in terms of personality test। इसमें होता ये है कि कैंडिडेट का रिटन और प्रैक्टिकल 2 देखा जाता है और इसमें कोई राइट आंसर और रॉन्ग आंसर्स नहीं होते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि कैंडिडेट फिट है या नहीं, बस इसमें ये देखा जाता है। और अगर आप मान के चलिए इस बार अगर SSB के 100 वैकेंसीज आए तो अगर व्हेन कंपेयर टू अदर नोटिफिकेशन, अगर होता ये है कि मेरिट लिस्ट में जो टॉप आए हैं उसको देते हैं, लेकिन व्हेन कमिंग टू SSB ऐसा नहीं होता है। SSB में अगर 100 वैकेंसीज बताए गए हैं इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में, अगर उन्हें लगता है कि एक भी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, दे विल बी कीपिंग 100 वैकेंसीज वैकेंट। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई अगर चलो कोई टॉप 100 में मतलब कोई आ गया है, अगर टॉप 100 मार्क्स का है क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का है, अगर 50 मार्क्स टॉपर को 50 मार्क्स आए तो दूसरे एग्जामिनेशन में ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर SSB में ऐसा नहीं होता है। दे विल बी कीपिंग 100 vacancies as vacant, but they'll be selecting only fit candidates. तो उन लोगों के पास कुछ कंपल्शन नहीं होता, they will be not having any compulsion to select any candidate based on written or personal interview test. तो इसमें 13 बोर्ड्स होते हैं, 4 इंडियन आर्मी के हैं, 4 इंडियन एयरफोर्स के हैं और 5 इंडियन नेवी के होते हैं। और इसका पैनल इंटरव्यू पैनल में होते हैं 3 काइंड ऑफ ऑफिसर्स होते हैं। फर्स्ट इज साइकोलॉजिस्ट होता है, सेकंड इज ग्रुप टास्क ऑफिसर होता है, थर्ड इज इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है। और SSB का इंटरव्यू 1 दिन या फिर 1 घंटा या फिर कुछ 9 to 5 वाला नहीं होता है, ये 5 days के लिए होता है।
SSB इंटरव्यू कंसिस्ट ऑफ 5 days। इसमें 5 days में 5 डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट होते हैं, वेरियस टेस्ट होते हैं। फर्स्ट डे 1 में स्क्रीनिंग टेस्ट होता है आपको। स्क्रीनिंग टेस्ट में वर्बल एंड नॉर्मल वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, 50 क्वेश्चंस इसमें होते हैं। और उसके बाद पिक्चर डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। फर्स्ट वर्बल एंड नॉन वर्बल का इंटेलिजेंस टेस्ट, इसका क्या होता है, इसका डिटेल रीजनिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन है। इसमें बहुत ही हार्ड, बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के रीजनिंग क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्शन वाले टेस्ट पूछते हैं। और उसके बाद पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें एक पिक्चर बताया जाता है कैंडिडेट को जस्ट फॉर 30 सेकेंड। आप 30 सेकेंड के बाद यू नीड टू रिकॉल के क्या है उसमें, मतलब व्हाट वाज द पिक्चर इज टेलिंग ऑल अबाउट। उसमें कैरेक्टर्स कितने हैं और उसमें जेंडर क्या है, वो पिक्चर का, उसमें मेल है, फीमेल है, या फिर उसके ऊपर आपको एक हाफ मिनट 30 सेकंड दिया जाता है, फिर उसके ऊपर आप स्टोरी लिखना पड़ता है। यू नीड टू राइट अ स्टोरी ऑन दैट व्हाट यू हैव सीन इन दोस पर्टिकुलर 30 सेकंड। तो ये काफी डिफिकल्ट टेस्ट है, और इसको क्लियर करने के बाद ही आपको सेकंड डे को आपको भेजा जाता है, और एल्स आउटराइटली आपको रिजेक्ट यहाँ से कर दिया जाता है। फिर सेकेंड डे साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन टेस्ट होता है। इसमें थ्री काइंड ऑफ टेस्ट होते हैं। फर्स्ट इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। आपको सिंपल रैंडमली 60 वर्ड्स बताते हैं बोर्ड पे, और सीक्वेंस में बताते हैं, और ईच वर्ड को आपको मतलब 15 सेकंड देते हैं। तो उसके बाद आपको व्हेन यू विल बी हैविंग 60 वर्ड, देन आपको एक स्टोरी लिखना होता है इसमें। तो ये काफी रिएक्टिव टेस्ट है। यू नीड टू एनालाइज द वर्ड्स व्हिच will be given on the screen, and you need to present a story. You need to write down the story of what those 60 words are saying in that screen, on that screen. Second वाला होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें आपको 60 सिचुएशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वर्किंग एज एन ऑफिसर, ठीक है, तो आपका दोस्त आता है, आपका दोस्त आके एक आर्मी यूनिट में he wants to see that particular army unit from inside। तो आप क्या करते हैं, आपके दोस्त को बताते हैं, अंदर लेके जाके सिक्योरिटी बाईपास करते हैं, या फिर कैसा करते हैं। तो ये यू नीड टू टेल दोस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सिचुएशन। दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आर नोन एज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो इसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, and you will be getting only 30 minutes, and within 30 minutes you will be having 60 questions। That is, for each 1 minute you will be writing down 2 questions। and finally होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो इसमें होता ये है कि आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके पेरेंट्स के, टीचर्स के, फ्रेंड्स के, अपने परसेप्शन के बारे में, ये पर्टिकुलर ये चीज के बारे में आप क्या सोचते थे। तो दिस इज नोन एज सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। आपके पेरेंट्स के बारे में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट टीचर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर फ्रेंड्स। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन बोलते हैं। तो साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन में 3 काइंड ऑफ टेस्ट होते हैं। फर्स्ट इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेकंड इज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एंड थर्ड इज सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। फोर्थ, डे 3 और डे 4 ये होता है मिलिट्री वाले एक्सरसाइज होते हैं। जैसा कि हम मूवीज में देखते हैं, द काइंड ऑफ आर्मी ट्रेनिंग, रिगोरस आर्मी ट्रेनिंग जो दिया जाता है, वो टेस्ट वहां पर किए जाते हैं, करवाए जाते हैं वो लोग। तो उसमें इंडिविजुअल काइंड ऑफ ट्रेनिंग टेस्ट भी होते हैं, और ग्रुप टास्क भी होते हैं। तो डे 3 एंड डे 4 विल बी ऑफ ग्रुप टेस्ट, एंड डे 5 विल बी ऑफ interview kind of test. In that, the candidate's confidence and his expression when he's speaking something, when he's describing any story, तो उसके expressions कैसे होते हैं, they'll be checking those expressions, and positive attitude, honesty चेक किया जाता है। तो ये ऑल पर्सनालिटी ट्रेट्स देखा जाता है एक कैंडिडेट में। तो बेस्ड ऑन ऑल डे 5 टेस्ट फाइनल मार्क्स आते हैं, 900 मार्क्स का कुछ होता है वो। तो उसके बाद आपको एसएसबी का सिलेक्शन होता है। तो जैसा आपको मैं पहले भी बताया था, अगर 100 स्टूडेंट्स अगर एसएसबी के इंटरव्यू में आते हैं और उन्हें लगता है कि these 100 candidates are not fit, they will be keeping those 100 vacancies
as it is. They will not be filling any single vacancy based on the merit list. They will be selecting based on the fittest of the fit criteria. तो इसमें और एक ये है कि पायलट जो एयरफोर्स वाला सेक्शन जो है उसको एक पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, ये एक टेस्ट होता है, ये एक सेम काइंड ऑफ वीडियो गेम का टेस्ट होता है, वीडियो गेम काइंड ऑफ टेस्ट होता है। इसमें ये होता है कि आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल दिया जाता है और यू विल बी हैविंग ऑन स्क्रीन there will be kind of aeroplane, so you need to fly an aeroplane like a computer game. तो इसमें होता है सिर्फ ये once in a lifetime test है. If you will be failing this test, then you are never be qualified for the air force in your entire lifetime. तो अगर कोई एस्पिरेंट एफकैट का टेस्ट देता है, आर्म फोर्स एंट्रेंस टेस्ट का, तो उसको ये वीडियो गेम का जो मतलब साइमुलेशन, रिमोट कंट्रोल साइमुलेशन का जो होता है ना, उसको बहुत अच्छी तरीके से ये आना चाहिए। तो इसमें ये होता है कि स्पीड एंड कंट्रोलिंग पावर ये चेक करते हैं वो लोग, और आपका जो उसमें जो वीडियो गेम में जो आपका एरोप्लेन जो जाता है ना, वो हाई स्पीड पे जाता है, उसमें कंट्रोलिंग पावर आपको होना चाहिए, स्पीड आपको डिटरमाइन करना चाहिए, स्पीड कितने स्पीड पे कितना कंट्रोलिंग होता है, कैसा कंट्रोल करना है। तो दे विल बी चेकिंग ऑल दोस स्किल्स ऑफ योर इन पायलट एप्टीट्यूड एंड बैटरी टेस्ट. So the last is UPSC CAPF, Central Armed Police Force. इसमें होता है ये कि there are 7 security forces in India under Ministry of Home Affairs, but UPSC CAPF exam will recruit on only 5 security forces. That is, those forces are CRPF, BSF, CISF, ITBP, and SSB. I'll be giving a short description of these 5 forces. सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है। इसको इंडिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का मतलब ये है कि नेक्सल अटैक, मतलब नेक्सलेट के खिलाफ इसको यूज किया जाता है। और कहीं पर अगर राइट काइंड ऑफ सिचुएशन होता है तो वहां पर सीआरपीएफ के फोर्सेस आते हैं। और सेकेंड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये जो है बॉर्डर को गार्ड करता है पीस टाइम में, और इंडियन आर्मी आती है कि वार टाइम पे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर, इसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पीस टाइम में गार्ड करती है। सो इन द पीस टाइम दीज बीएसएफ विल गार्ड बॉर्डर of Pakistan and as well as Bangladesh. So when the war arises, what kind of situation arises, then the BSF will come back and army will go at the fronter level. So third is CISF, Central Industrial Security Force. इसका ये कहाँ पर आपको देखा जा सकता है, ये फोर्स को, पर्टिकुलर फोर्स को, ये एयरपोर्ट्स पे देखा जाता है। CISF, you'll be having these forces in airports and as well as in PSUs, public sector undertaking, गवर्नमेंट के जो एजेंसीज रहते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हो गया, और आरबीआई हो गया, या फिर कुछ भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे वेयर गवर्नमेंट नीड्स प्रोटेक्शन, देन दे विल कॉल CISF। एंड ITBP, इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस, ये सिक्किम में डिप्लॉय होता है। ये दिस पुलिस हैज they are very well versed in border and hill terrain activities। ये लोग बहुत ही माहिर रहते हैं पहाड़ पे चढ़ने के लिए। तो इनको सिक्किम बॉर्डर पे, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे, चाइना के बॉर्डर पे रखा जाता है। सशस्त्र सीमा बल ये भी वहीं पर है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे है। तो इसमें रिक्रूटमेंट, ये 5 फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट जो एक यूनिट होती है, तो उसको हेड करता है असिस्टेंट कमांडेंट। असिस्टेंट कमांडेंट का रिक्रूटमेंट UPSC CAPF के जरिए से होता है। इसमें एग्जाम पैटर्न है इसमें 3 पैटर्न है एग्जाम में। फर्स्ट इज रिटन वाला, सेकंड इज फिजिकल, एंड थर्ड इज इंटरव्यू। और एज लिमिट है 20 to 25 ईयर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है any graduation. You need to have any graduation to write this particular examination. So coming to the written wala part, so you'll be having 2 papers. In paper 1 you'll be having MCQs,
In MCQs, there will be questions from aptitude, GS, and reasoning as well. And in paper two, there will be the paper two will be a descriptive, in which there will be an essay, and there will be a GS question. So what I'll be giving examples of GS question. So they'll be asking what is Indian foreign policy with respect to the current situation in Afghanistan. So you need to bring all the perspective in your answer writing. So what is the Indian foreign policy with respect to West Asia? So you need to write on that perspective point, and you need to write how India is engaging with Afghanistan government and with the rebels like Taliban, and what is the India's stake in Afghanistan's infrastructure development, because Afghanistan is well connected between Asia, between the South Asia and the Central Asia. So we have invested a lot of amount in building infrastructure in Afghanistan, because from we are having from Chabahar port in Iran. We are having a link from Chabahar port in Iran to Central Asia through Afghanistan. We are having a road. What is the future of that particular road? How we are going to enter the Central Asia? We need to cover all the aspects in that particular essay. In GS kind of question. So the time duration for paper 2 is 3 hours and paper 1 is 2 hours. So the total marks for paper 1 is 250 and for paper 2 is 200. So the total marks for both the papers are 450. So after getting all the results, the merit list, based on the merit list, you'll be moved to the next round, that is PET, physical test. So in the physical test, there are 4 kinds of events. First is 100-meter race, second is 800-meter race, third is long jump, and fourth is shot put. You are having, if you are a male aspirant, then you are having 16 seconds to complete 100-meter race, and if you are a female aspirant, then you are having 18 seconds. Simultaneously, for 800-meter race, you are having 3 minutes and 45 seconds. That is 205 seconds for male, and for female 4 minutes 45 seconds. And long jump. So these 4 events, 100-meter race, 800-meter race, long jump, and shot put, if you are going to practice for say like 45 days, you'll be easily clearing these 4 events. And the only toughest part of these 4 events is 800-meter race. You need to practice. So in CAPF, the time given is 5 to crack 800 meters in CAPF than in Telangana Police. So there will be negative marking of 1 by 3rd. It means that for every 3 wrong answer, 1 right answer will be deducted, and the interview will be having 150 marks based upon the mains answer, mains marks and interview marks. You will be getting the final merit list, and based upon the final merit list, your selection will be ensured. So this is all about CAPF. So I have covered I have covered all the topics. So I'll be once again I'll be giving a summary. I have covered SSC CHSL, that is combined higher secondary level, SSC CGL, combined graduate level. Third is IBPS clerk. Fourth is IBPS PO. So fifth is SBI clerk and SBI PO. The pattern will be same, nothing different, but the one catch is that IBPS is having a separate examination of its own, and the SBI is having its own examination. That is the only basic difference. Remaining else, everything is same. So 6 examinations we have completed up to SBI PO. 7th is NDA examination, 8th is CDSC, 9th is AFCAT, 10th is this UPSC CAPF.
with this, I have completed this 10 examination, and inshallah, if you guys are interested, then I'll be telling another kind of examination, UPSC civil services. And apart from civil services, there are many examinations like public sector undertakings, and in RBI, NTPC, railways. So I'll be covering that if you guys are interested. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, Mr. Arafat. Now I would request all the attendees to put their questions in the Q&A box if they have any. Thank you so much, Mr. Arafat, for taking such a detailed session. I guess you have taken it in very detailed, where you have explained right from why one should go into a government service. What are the, I know you were in this limited time, you were not able to cover the entire government service. There is a lot more. However, since you have still covered, I guess, the 10 government services, I guess, and that is something which is a lot still. Thank you for letting us know how in detail, how these exams are there in the detail, and letting us know how one can crack it. So thank you so much for your insight on that. Now I would like to start with the Q&A that are coming into the Q&A box. So the first question for you, Mr. Arafat, is in PO exam, is it possible that they can appoint a candidate in the marketing department? Sorry, I didn't get your question. So the question is, in PO, is it possible if the candidate can get appointed for the marketing department? Is it like they go specifically, if they appoint you, they put you into a marketing department? Is it possible? Yeah, there are various subdivisions in the bank. They'll be they'll be giving various kinds of role for a PO. So after getting selected as a PO, a candidate will have to work for 2 years for 3 different branches. And after completion of that tenure, he'll be appointed as assistant manager in particular bank. So after getting appointed as a in particular bank as a assistant manager, he'll be looking into various things related to the bank functioning of the bank. So if there is a need in marketing section, they'll be putting a candidate into the particular marketing department. Right. Thank you. So the next question is from Zoya Chogle. She's asking, is there a physical test in CDSE? Yeah, there is a physical test in CDSE, NDA, and AFCAT. For these 3 examinations, there is a physical test, not particularly physical test, but you need to get into the SSB, and you have to be in SSB for 5 days. In 5 days, the day 3 and day 4, there will be a group exercises, and there will be group activities and individual activities. Like you have to climb a rope, and you have to do jumps from like high jump and long jumps, and there will be various physical activities you need to undergo, and you need to clear the test if you are opting for CDSE. Thank you. So the next question says, with respect to regarding the examination, so when the notification for these exams are expected, and how one can, know when these exams or when the forms should be filled for these examinations? What would be the source of information here? Yeah, for UPSC examination, the UPSC will be releasing a year's calendar of notification well in advance. Like the 2022 calendar is available in the UPSC website. You need to go to that website and you need to check. You'll be getting the examination calendar. And similarly, various kinds of examination, they will be releasing the notifications they'll be giving advertisements in newspapers, and as well as today there is a lot of information flow of information, and the candidate can easily get by doing a simple Google search.
Thank you. The next question is again with respect to preparation for the examination. I'm going to club 2, 3 questions together, which is on the same line. So the first thing is, can somebody prepare for these examinations on their own? And is it good to join a coaching classes for these examination, or one should prepare on their own? What is your viewpoint on that? Um, the uh, the question of coaching depends upon the candidate's ability. If a candidate can understand on his own or on her own, then there is no need of coaching. But if a candidate is going to start from scratch, then definitely coaching will be a good help to a particular candidate. Okay. Uh, a follow up on that. So, if somebody is preparing on their own, so what would be the best reliable sources to prepare for these examinations? There are various kinds of books available in the market, but I suggest R.S. Agarwal book for quantitative aptitude, and for English, Word Power Made Easy, written by Normal Levi's, or else the candidate can take Arihant series or Tata McGraw Hill series you can take. Okay. And if somebody is opting for a coaching classes, specifically this question is with respect to online coaching classes like Vision or Unacademy. Are they useful? Should someone opt for those online classes, or a physical classes is much more preferable? What are your thoughts on that? It's all depend upon the candidate's flexibility. If the candidate is comfortable in physical classes, then he can definitely go for physical class. But I think there is no need for physical class, because today we are living in a world of information overflow. We can get each and every section of syllabus that is covered in very detail, and minute analysis is available on YouTube. So a candidate, if he goes through YouTube, then easily he can crack all the examinations, rather than going to coaching institutes and wasting a lot of money. Right. So the next question is around the interviews. So interviews are basically, Mr. Arafat, where they ask you questions with respect to general knowledge, or they might ask questions with respect to analyzing how well you can get a solution for a problem. So how one should prepare for such kind of interviews, or what are your tips on preparing for government jobs interviews? Again, most of the interviews will be testing the personality traits of an individual. So nowadays there are a lot of mock tests of UPSC aspirants available on the YouTube. So a candidate or an aspirant who is ready to go or ready to undertake the interview can see a lot of mock tests over YouTube, and definitely they can learn a lot from those mock tests. And apart from watching YouTube videos, there are some institutes where they'll be they will be conducting mock interviews. So if a candidate goes and enroll in that mock interviews, definitely it will be helpful for that particular candidate. So the next question is more with respect to your experience, and how did you ended up cracking your examination? Can you give a small details on how you did it? Yeah, basically, I have written Group 2 examination of Telangana State Public Service Commission. It was four papers, consist of 150 marks. The total was about 600 marks. So after writing that examination, I have underwent interview part, and in interview. It was the interview was about 30 minutes, I think. Yeah, 30 minutes. So I was asked various questions regarding uh, the geography of the Middle East, because I have mentioned, you see, in interview,
you are supposed to ask based on the questions what you have written in the form which will be given to you before the interview. Okay, they'll be giving a form, and in that form there are various questions like what are your hobbies, and what you have done, extracurriculum course, what you have done. So I have mentioned a course I have done, war for the greater Middle East. I have done a course. Uh, so they have asked me why you have done that particular course, and direct the questions based on the form which you have, which they will give before the interview. Okay, so you need to write those answers which you are comfortable, and which you are in which you will be having a vast kind of experience. You need to write down that question, that information on that particular paper. So am I audible? Yes, yes, sir, you are audible. Huh. So, so they have asked me about Middle East geography, and apart from that, they have asked me previous job experience. No sort of questions based on general knowledge or like uh, uh, testing of candidates' knowledge. They have not asked any kind of such questions, but they have asked me questions based on that form on which I have written the information. So the interview will be mostly will be about the information which we will write on that particular form. Thank you, Mr. Arafat, for sharing your experience with us. Do you have any final words of motivation for the youths to enter these services? Yeah, person has to enter the government services because it is us who can uh, direct the policy. The main thing is we have to enter the policy making wala part, because in policy making you can do something different, and you can bring change with respect to your community, with respect to your nation, and you can uplift the certain strata of the people. First, you need to get into the policy making. If you are unable to get into policy making, then you have to get into the policy implementation. So apart from the policy making and policy implementation, the need of the hour for Muslims in particular is to get into the judiciary section as well, because there is a lot of vacuum created in the judiciary section, because we don't have advocates, we don't have any judges over there. So the main demand right now for our community is to get into the judiciary. I hope and I request the attendees over here to pursue law. That is also a very good career option, and it will definitely boost our community's future generation. Thank you so much, Mr. Arafat. In case the last point I would like to point, if somebody wants to get more guidance and wants to reach out to you for if they have any questions, what would be the best or preferred way you would like them to reach out to you? Yeah, they can reach me at my WhatsApp number. I have shared my number with you, and you can share over the chat section. Definitely, I'll try to answer and address each of the query. Inshallah, I'm looking forward to help students, student community, as well as aspirants of our community. Thank you so much, Mr. Arafat. Even having a very tight schedule, you're ready and willing to help so much to the participants. I really, really appreciate your gesture over here. Yeah, that was all the questions that we had today. Thank you so much. Now I would like Ms. Risha to give a thanks note. Over to you, Risha. Thank you, Baji.
So, on behalf of the entire team of AMP, I would like to express my sincere gratitude to Mr. Amer Arafath ji for sharing his valuable thoughts and experience with us. So, this session has been of great significance for all those who want to pursue government jobs in the near future. Furthermore, I would like to thank all the panelists and the participants for sparing out time to make this event successful. Thank you.